Hello. 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 Yes, sir. Assalamu Alaikum salam. Just tell me whether we should continue with this unit Laplace or we should go for another Yes, unit. sir. कन्वोल्यूशन थ्योरम आप बोल दिए तो उसके बाद ठीक है, राइट, कन्वोल्यूशन थ्योरम बोल रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जी, जो रिपीटेड है। खैर, आपको कन्वोल्यूशन है तो फिर मैं कन्वोल्यूशन बता दूं। ठीक है, देखिए कन्वोल्यूशंस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। थोड़ा बड़े रहते प्रॉब्लम्स, राइट। एक बार yes देखिए, sir. प्रॉब्लम्स आर लॉन्ग आंसर हियर, दिस यू विल गेट एज a long answer. So we can go for convolution theorem. Convolution theorem. Already I sent one PDF. In that PDF also convolution theorem is there, but still I want to explain what is that. Sometimes you may get this question for 2 marks also. It means that it is asking to just write their statement. So I'm writing the statement: if L of f of t, if L of f of t is equals to f bar of s, L of f of t is equal to f bar of s, and L of g of t, L of g of t is equals to, suppose this is g bar of s, then convolution is nothing but a special type of product, right? F of t, and that product value should be defined with a improper integral that will be written as f of t star g of t. Okay, it means that Mhm. f bar of s into g bar of s, that's a special product. Convolution is nothing but a special product whose value will be defined with an improper integral. This is, or another way, one more way. If you take Laplace inverse on both sides, you may get Laplace inverse of f bar of s into g bar of s. Laplace inverse of f bar of s into g bar of s is equal to, if you apply inverse on both sides, यहाँ पे Laplace inverse आ जाता. Here L and L inverse cancel it out. You will get here f of t star g of t, and its value will be defined like this: integral Mhm. 0 to t, integral 0 to t, f of u into g of t minus u d. It is a statement of convolution theorem. So problems थोड़ा बड़े रहते हैं, we'll do that problems also. एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए आप, Okay. प्रॉब्लम करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है ना। जी सर. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछते रहता, that is using convolution theorem prove that. Write the question. This question is asking so many times in exam. It's a long answer. Using convolution theorem, using convolution theorem, prove that, prove that Laplace inverse of s by s square plus a square whole square value
compulsory to apply the convolution theorem, there must be two terms required, compulsory. Though Okay. the answer is here, it is already given. Sometimes evaluate भी दे देता आपको, or sometimes this answer will be given t sin at by 2a. This one we have to prove using convolution theorem, right? Okay. So now Yes, you sir. see how it works. Statement एक बार अच्छा देख लीजिए. Laplace inverse of two terms are there, their product. Okay, that value will be defined with this integral. This part and this part is important. So we will start. The solution will be, so this is given here. Our given value is Laplace inverse of s by s square plus a square whole square, Mm. which can be break into two different parts like this. Laplace inverse of first part will be taken as s by s square plus a square will be the first part, multiplied by another part will be 1 by s square plus a square. Can we write like this? Yes, sir. Yes. So it's not compulsory to take the first term only as s. आप first term को भी लगा सकते हैं, आप second term को भी लगा सकते हैं. There is no problem at all. ठीक है ना? Okay. Just 1 second, मैं इधर चार्जिंग का प्लग लगा लेता हूँ. 1 मिनट. जी. So there are actually two terms we have considered because the denominator is squared. So first term will be taken as let us see like that. This Okay. can also be written as Laplace inverse of, assuming that the first term is f bar of s, into the second term will be g bar of s. Right? Right now? So tell me what is f bar Yes, of sir. s becomes? What is f bar of s? Sin 80. Okay, first we write s by s square Okay. plus a square, right? And g bar of s is equals to 1 by s square plus a square. 1 by s square plus a square. So then taking Laplace inverse on both sides, like that. Laplace inverse of f bar of s is equals to Laplace inverse of s by S is s square plus a s square. square plus a square. You know what is the answer of this one? Numerator में s आ गया तो cos का है, 1 आ गया तो sin का है. So Laplace Sin. inverse Gotcha. of f bar of s value is f of t, because अपन inverse Laplace transform पढ़ा इसलिए ना. अब डायरेक्टली कन्वोल्यूशन Yes. बता दो बोल रहे तो फिर मैं इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता दूं. Cos 80. This is f of t. Okay, but we required f of Yes, u. sir. See here, ये statement में देखिए f of u चाहिए आप. F of t we got it now. So Yes, sir. from the f of t we can easily get f of u value. What is f of u becomes? Cos a u. Cos a. Just a variable change. Yeah. Okay, just a variable change. F of t is cos a Okay. t. F of u is cos a u. Similarly, we can apply Laplace inverse on both sides here also. Laplace inverse of g bar of s is equals to Laplace inverse of 1 by s square plus a square. This is Okay. equals to here Laplace inverse f bar of f of t. So this is become g of t. G of t is equals to, this is 1 by a
Sin AT is the actual inverse Laplace transform formula. But we don't want g of t, we want Okay. g of u and g of t minus u. पहले g of u कर लेना, then t minus u easily कर सकते हैं आप. G of u means 1 by a is a constant. There is no change here. Sin au as it is. We required g of t minus u value. It means that wherever u is there, we put what? T minus u. 1 by a. T minus u. Yeah. Sin up to sin and a also as it is. U can be written as t minus u. T minus u. These two values are we required to go for our actual integral part. यहाँ पे एक और step भी possible है. 1 by a sin of, if you multiply, you will get at plus au. Not plus, it is minus. at minus Okay. au. इसके बाद अभी अपन कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे एंड आंसर आल्सो वी नो दैट आंसर वी हैव टू शो. So by convolution theorem, by convolution theorem, by convolution theorem, Laplace inverse of f bar of s into g bar of s, दो टर्म्स का Laplace inverse, okay, convolution बोलते हैं. That is equal to integral Okay. 0 to t f of u g of t minus u du is the statement. यहाँ पे भी है, देखिए ऊपर यहाँ पे भी है, यही लिखना है आपको. ये f bar of s equal to 0 to t f of t star d of t भी लिख सकते हैं, f of u g of t minus Okay. u du. Let us substitute these values here and simplify, and we will get answer. That answer is also there. So Laplace inverse Okay. of f bar of s is, we have here s square by s square plus a square into g bar of s we have here is 1 by s square plus a square. That will be closed. This is equal to integral 0 to t as it is. F of u value, as you know, we got it as cos au here, and then g of t minus u value also we got it 1 by a sin of at minus Minus a au. du. अभी आया ना ऊपर आपको वैल्यू से? Yes. Yes, sir. Yes. So what we'll do, 1 by a is a constant, we can pull it out. 1 by a is a constant, we can pull it out. This is 0 to t cos au into sin of at minus au and then du. इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने से पहले साइन ऑफ a माइनस बी एक्सपेंशन अप्लाई करें. Okay. हाँ, 15 minutes. Sin of a minus b expansion, this is Sin assuming of. it as a and it is b. Sin of a minus b expansion लिखूंगा यहाँ पे. Yes, sir. Sin of a minus b expansion is equals to sin a cos b, sin a cos b minus cos a sin b. Sin b. Okay. So then if you continue by writing this into sin of a minus b expansion, we will get this is 1 by a integral 0 to t, right? Yes, sir. Cos au will be there. We have to open a bracket and then sin of a minus b expansion we should write it here. What is that? Tell me. Sin at. Okay, sin a means sin Sin. at. Cos Yeah. b means cos au.
minus cos A means cos 80. Here A value is 80 into 80 sin AU. minus into sin A, Sin AU. Sin A cos B minus cos A. Sin B bracket sin close. B. And that du will be as it is. Now what happened actually? This value will be multiplied with this as well as this with this. Yeah. Right? Yes, So sir. which is equal to 1 by A. 1 by A. Remember t is our function here because we are integrating with respect to t. U is with respect to u we are integrating. T is our function. यहाँ पे u में इंटीग्रेट कर रहे हैं. Okay. सॉरी t कांस्टेंट है. देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई हियर. मल्टीप्लाई व्हाट हैपेंड? sin 80 Sin 80 cos into into cos square AU cos square au. राइट. इसको क्या minus, करेंगे? yeah. अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देंगे. तो इसके साथ में du भी लगा दे रहा हूँ. Okay. दिस 1 by a विल कम हियर ऑल्सो. तो दोनों को स्प्लिट कर दे रहे अपन. एंड cos 80 अच्छा. इज ए कांस्टेंट. उसके साथ ये डिनोमिनेटर वाला a एज इट इज है. ठीक है ना? तो 0 to t भी एज इट इज है. दो अलग अलग फंक्शन में ट्रीट करके सॉल्व करेंगे. राइट. Yes, sir. तो क्या हो जाता है? cos 80 आउटसाइड. तो क्या बच गया? Sin sin AU au DU और cos AU. cos au. cos au एंड दैट इज सर, d. ठीक है ना? इस तरफ भी sin 80 कांस्टेंट है ना LHS में? नेक्स्ट स्टेप में लेंगे कॉमन उसको बाहर. नेक्स्ट ओके, स्टेप में ओके, लेंगे. ओके. अभी पूरा एक साथ ही करें तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप. यहाँ पे एक काम करना है आपको. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. बिकॉज 2 sin a cos b फॉर्म में आ जाता है. और यहाँ पे इसको cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में अज्यूम करके 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 फॉर दिस टर्म. और ये 2 ओके. sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. So then if you continue, just now what you said, sin 80 is a constant, so better we can pull out sin 80 outside, divided by a also outside. Okay, integral 0 to t as it is. Cos square theta can be written as 1 plus cos 1 plus 2 into here 2 theta value is au. Correct है ना? By 2 yes, sir. du. Okay, minus cos 80 by 2a. Again it is a constant. 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta means sin 2 into theta value is au here and then du. कुछ doubt है यहाँ तक? Okay, nice, sir. No doubt now? Yes. Take 1 by 2 outside and then individually we have to integrate with respect to u. It means it is equal to sin 80 by 2 outside 2a within the bracket integral 0 to t. It's 1 plus cos 2a u and bracket close du and bracket close minus cos 80 by 2a. This is also 0 to t sin 2a u du and that's it, bracket close. So the answers 1 with respect to u. 1 du is what? 1 dx is x. 1 dt is X, t. yeah. 1 du So is U. u. That's U. it. 2a outside. That's a u. Okay. And the limits are 0 to t. Individually apply भी कर दीजिए आप. Plus cos 2au integration is sin. Cos का integration sin 2au by u coefficient is 2a here and their limits are 0 to t. You understand this step? Yeah. Cos का Yes, integration sir. sin
and whatever u coefficient is there, that we have to write in the denominator. Denominator. Plus cos at by 2a, then integral of sin is minus cos actually. ओके तो ये Okay. माइनस बाहर जाके Okay. माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, देखो मैं पहले से ही cos 2au माइनस आता, वो माइनस बाहर जाके प्लस हो गया, प्लस हो गया, राइट. 0 to t. Now apply the limits. We are getting sin at by 2a, that's upper limit minus lower limit means only t you will get. Okay, plus 1 by 2a Yeah. is a constant here. 1 by 2a is a constant. If you apply upper limit, what happened? Sin 2a u becomes t, lower T. limit sin 0 is 0, right? Yeah. Lower limit sin 0 is 0, 0. plus this 2a also we can pull it out, cos at by 2 2s are 4a square into upper limit cos 2at upper limit. If you want, you can mention upper limit here. Lower limit cos 0 is 1, right? Yes, sir. Right? Lower limit cos Yes, sir. 0 is 1. तो करना क्या है आपको next? This one we have to multiply with this and as well as with this. Similarly, this one with this Okay. and as well as with this. And then finally कुछ कॉमन आता, फिर आंसर आ जाए. Okay. देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ये बोलिए आप. Sin 80 square by 2a. t sin 80 by 2a. Okay, t भी है ना, T. t Yes, sir. sin 80 by 2a, which By of actual 2a. अपना आंसर है. बाद में के पूरे टर्म्स कैंसिल होना चाहिए. प्लस हाँ. प्लस sin 80 Sin 80 by sin 4a 80 square. sin 280 sin 280 Yeah. by 4a square. करेक्ट है ना? Yes, sir. करेक्ट है. प्लस प्लस cos 80 into cos Cos 280 280 by by 4a square. 4a square, and that will be going that side also, minus cos 80 by 4 4a square. square, right? करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब खाली सेकेंड और थर्ड टर्म में से अपन 4a स्क्वायर कॉमन लेना है, सेकेंड और थर्ड टर्म, Okay. राइट? सेकेंड और थर्ड टर्म से Okay. बी केयरफुल. So this is equals to t sin 80 by 2a plus 1 by 4a square. I want to take common from second and third term. Then automatically it is becomes sin a sin a sin b plus cos a cos b. मैं रीड कर दिया, किसका एक्सपेंशन है बोलिए आप. जी सर. sin a sin b plus cos a cos b. What's the हाँ, expansion of sin a this? minus b. No, it's a cos a minus b का एक्सपेंशन अच्छा. है वो. Cos मैं a लिख देता minus हूँ. b. cos of a minus b is equals to, पहले cos भी आ सकता, पहले sin भी आ सकता, प्लस में कुछ भी नहीं होता. cos a cos b plus sin a Sin a sin b. sin b. So in addition, if you want to write sin also first, there is no problem at all. Subtraction में ऐसा नहीं करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है ना. Okay. जी sin सर. पहले रहने दो, cos पहले रहने दो, that's no problem at all. sin t sin 80 by 2a plus 1 by 4a square into cos of a minus b expansion. Here a value is 80 minus b value is 280. Correct? Yes, sir. Minus cos 80 by 4a square. Now 80 minus 280 minus 80, right?
80 Yeah. minus 280 is minus 80, but already we know that cos of minus theta is cos theta only. Yeah. Sin 80 by 2a, and cos of minus theta is cos theta only, means you will get cos 80 only by 4a square, and minus cos 80 by 4a square. 4a square. This and this will be cancelled. Finally, our answer, Laplace inverse of s by s square plus a square whole square. Answer is equal to, we proved that t sin 80, t sin 80 by 2. This is the end of this very, very important problem. We have used so many formulas here in this problem. Yeah. आप देख सकते हैं इसकी recording भी बाद में. So actually this is the statement. They may ask you for 2 marks. Laplace inverse f bar of Okay. s d bar of s. This is the question. सर So कॉन्वोल्यूशन सिर्फ लैपलेस इनवर्स का रहता. inverse में ही Laplace inverse में ही ओके. convolution रहता. ओके. So two terms we are there, two terms product, and whose value will be defined with an integral that is 0 to t. So variable we have to convert in terms of u, and then simplifying, and we are getting the answer. This is called important concept. Laplace का convolution theorem था ये. ओके. अच्छा देख लीजिए, और इसके बाद में आपको चाहिए तो मैं एक और क्वेश्चन भी इसका बता सकता हूँ, मगर अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें से पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा. जी जो सर है नोट्स. अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ सकता है इसमें से, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा पूछ रहा देखिए एग्जाम में. मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन लिख के आपको. ये क्वेश्चन ज्यादा आते देखिए एग्जाम में. फाइंड शॉर्ट आंसर्स में लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ s plus 1 by s minus 1 in bracket close. This type of questions maximum you will get. Okay. इसके लिए आपको डेरिवेटिव की बेसिक को रहना चाहिए. पर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए आपको समझ में आ सकता है क्या सोल्यूशन. लेट अस अज्यूम दैट, अभी अपन नहीं लैप्लास में एफ ऑफ टी बोल के अज्यूम करते हैं ना, इनवर्स में क्या. हमेशा एफ बार ऑफ एस अज्यूम करना. ठीक. लेट एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू, रिवर्स कर रहे हैं अपने, इनवर्स कर रहे हैं, लॉग ऑफ एस प्लस 1 बाई एस माइनस 1. दिस इज इक्वल टू log a by b form, we write it as log a minus log b, log a minus log b. So then after this one we have to find out its derivative, f bar हाँ. dash of s dash derivative. So log x differentiation is 1 by x, as you know, 1 by s plus 1 minus 1 by s minus 1. Differentiation of 1 Yes. log x Yeah. is 1 by x. Then Yeah. taking Laplace inverse on both sides, Laplace inverse of f bar dash of s is equals to Laplace inverse of 1 by s plus 1 minus Laplace inverse of 1 by s minus 1. Okay. तो लैप्लास में डायरेक्ट 1 by s plus e पावर माइनस 80 है, तो इसका आंसर देखिए डायरेक्टली इनवर्स मैंने पढ़ाया ना आपको, इसलिए डायरेक्ट आंसर से लिख रहा हूँ. दिस इज e पावर माइनस टी माइनस दिस इज e पावर प्लस टी. किसका आंसर है ये? लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार डैश ऑफ s का आंसर है. बट Okay. ऑलरेडी वी नो दैट, अगर अपन पूरा यूनिट करते आते तो आपको शायद ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट समझ में आता था. लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार डैश ऑफ एस की वैल्यू, एफ बार डैश ऑफ एस वैल्यू इज इक्वल टू
-1 होल पावर 1। एक बार डेरिवेटिव करे तो ऐसा लिखना है, t⁻1 × ओके। f। दो बार डेरिवेटिव करे तो -1 होल स्क्वायर t² f ऐसा लिखते हैं। तो अपन हम्म। एक ही बार डेरिवेटिव करें, तो देन इट्स वैल्यू विल बी हियर वी राइट माइनस, इसकी जगह पे लिखना है -t f। करेक्ट। -1 यस होल सर। पावर 1 इस उतना ही होता ना, t⁻1 भी उतना ही होता। तो t f इज इक्वल टू e⁻t minus e⁻t. This is, we multiply with minus sign, the order will change. So if you multiply with minus sign, the order will change. T f of t value is equals to, the order will change here. It's e⁻t minus e⁻t. Then dividing t on both sides, f of t is equals to e⁻t minus e⁻t whole divided by t. ठीक है? But f of t ओके। is nothing but, by definition of Laplace inverse transform, f of t value is Laplace inverse of f bar of s, which is equal to e⁻t minus e⁻t by t. Therefore, Laplace inverse of f bar of s किसको assume करें अपन? Log of s plus 1 by यस। s minus 1 को assume करें ना? ओ या। That is equal to, finally its answer is e⁻t minus e⁻t by t. This is the end of this शॉर्ट आंसर problem. है सर नहीं? हाँ, शॉर्ट आंसर ही, शॉर्ट आंसर पूछा जी ज्यादा ओके। है। हाँ हाँ। ठीक है, आपको एक और यूनिट बोलता हूँ मैं, आपको थर्ड यूनिट भी अभी थोड़ी देर से एक और मीटिंग शेड्यूल करके मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप थर्ड रेडी रहिए। थर्ड थर्ड यूनिट यूनिट सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या फिर ओके सेकंड यूनिट बोल तो भी करा देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा भी। मैं देख लेता हूँ कौन सा इजी रहता है आपके लिए, मैं सर। देख के करा दूँ। हाँ जी सर, वैसा करिए। जी। जी। या तो हायर ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, आप रेडी रहिए, मैं कभी जी। भी क्लास शेड्यूल कर सकता हूँ। थोड़ा ब्रेक देके फिर जी स्टार्ट जी करते ठीक है सर। हैं। ठीक है, आज शाम में ओके। एक दो तीन सेक्शंस लेने की कोशिश करेंगे शाम तक। ओके सर। ठीक है।